So, friends, good morning to all of you and welcome to Gyan Jyoti online classes. So, dear students, today we will discuss chapter number 5, that is Kinds of Nouns of class 4. That is your English grammar book. Okay. So, this is your chapter number 5. So, I request you to please open page number 22, that is Kinds of Nouns. Okay. So today we will be discussing about kinds of nouns. So before we go into the kinds of nouns, first of all we have to know what is nouns. So nouns are the names of a person, place or thing. So copy down. So nouns are the names of person, place or things. Okay, so nouns are the names of a person, place or things in general. Okay, so there are 5 types of or 5 kinds of nouns we have to read here. Okay, so there are 5 types of nouns. Types of nouns. Okay. So once again, look at your blackboard. Nouns are the names of person, place or things. And there are 5 types of nouns. But today we will be reading about 4 types of nouns. Okay. So there are 5 types of nouns. Okay, what are they? Proper noun, common noun, okay, collective noun, abstract noun, and last one is your material noun. Material or concrete noun. So today we will be discussing about these 4 types of nouns. That is your proper noun, common noun, collective noun, and abstract noun. It is not in your book, that is your material or concrete noun, but then we will study this material noun or concrete noun. So nouns are the names of person, place or things in general. That may be your names, that may be person. Okay, that will be the name of any person like Sita, Geeta, Rita, Sita, Geeta. Okay, that will be place like your Agra, Delhi, or animals or things. Okay, things like bench, table, etc. Okay, so today we will be discussing about these 4 types of nouns. Okay, so nouns are the names of person, place or things. That may be the name of particular person, that is Sita, Geeta, Rita, what may be, and places like Agra, Delhi, okay, and your Bhubaneswar also, okay, and things like bench, table, chair, etc. Whatever the things that are present around you. Okay. So students, have you written this? Okay, write it down quickly. Thereafter we will discuss about these 4 types of your nouns. So types of nouns. Types of
nouns. In this types of noun, first kind of noun is your proper noun. So proper noun is a noun that refers to a particular person, place, animals or things. Okay. So what is a proper noun? Proper noun is a noun that refers to a particular person, place, animals or things. In general, the particular person we refer to as it as a proper noun. For example, let's make example. Sahil is a good boy. Arun is playing on the ground. So these are two sentences. We have to look after this. That in the first sentence, Sahil is a good boy. It identifies that who is good boy. Sahil is a good boy. So Sahil is a particular person. It is a particular person who Sahil. In the second sentence, we will look that Arun is playing on the ground. So here Arun is a particular person. It is not a common person. Okay. So nouns are the names of particular person, place or things. And second, we look after the types of nouns. Okay, kinds of nouns. So there are 5 types of nouns, but today we will be reading about 4 types of nouns. That one is proper noun, common noun, collective noun, abstract noun. Okay. So the first noun is a proper noun. What do you mean by proper noun? Proper noun is a noun that refers or identifies to a particular place, person, animals or things. So proper nouns refers to or identifies a particular place, things, animals or person. So look at these 4 sentences. Sahil is a good boy. Arun is playing on the ground. The Jama Masjid is a mosque in New Delhi. My favorite book is Gita. So here are the underlined words. Look at these underlined words. Okay. So these underlined words are particular person, particular place or particular thing. Okay. तो प्रॉपर नाउन क्या है? वो नाउन है जो कि क्या है पर्टिकुलरली किसी पर्सन को, प्लेस को, थिंग्स को क्या है आइडेंटिफाई करते हैं या बताते हैं. उनको क्या है प्रॉपर नाउन बोला जाता है. पहले सेंटेंस में देखो तुम लोग, साहिल इज गुड बॉय. साहिल क्या है? पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, पर्टिकुलर एक लड़के का नाम है. हो गया. तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन कहा जाएगा. सेकंड है अरुण भी एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है. जामा मस्जिद पर्टिकुलर प्लेस व्हिच इज इन. Okay, particular thing which is in particular place, that is your New Delhi, and Gita is a particular thing. So all these underlined words identifies or refers a particular place, things or person. So they are called your proper noun. Okay, write it down. So what is my common noun? The second type of sentence, second type of noun is your common noun. Okay, so common nouns refers to
Common noun refers to, so common noun refers to a person, place or things in general. So common noun refers to a person, place or things in general. Okay. So for example, the driver is driving the car. Okay. My friend is reading a story book. The teacher is teaching in his class, and the doctor is treating his patient. Okay, so look at these four sentences: that the driver is driving the car, my friend is reading a storybook, the teacher is teaching in his class, the doctor is treating his patient. Okay, so here all these underline words: driver, friend, teacher, doctor. They belong to a common person. Okay, they are common one. If we find some driver, okay, if we need to know the name of some driver, then that would be your proper noun. And if a sentence is given that the driver is driving the car, then we can identify that this driver is a common person. Okay, so common noun refers to a person, place or things in general. Okay, and it okay, so common noun, one more example of common noun is that I bought a cake from the bakery. So here bakery is also a common place from where we get cake. So it is a what? It is your common noun. Okay. तो कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन वो नाउन को मतलब रिफर्स करता है, पर्सन, प्लेस और थिंग को रिफर करता है जो इन जनरल हम क्या है, हम लोग क्या है, कॉमन इसको क्या है जानते हैं. जैसे कि टीचर हो गया, वो कॉमन हो गया. अब टीचर में किसी का नाम अगर आ गया, हो गया, टीचर में अगर किसी टीचर का नाम आ गया तो वो क्या है, प्रॉपर नाउन में क्या है जाएगा. समझे? और अगर टीचर कहलाएगा कि एक सेंटेंस में कोई टीचर रिफर कर रहा है, कोई ड्राइवर रिफर कर रहा है, तो वो सब क्या कॉमन क्या है आएंगे. समझे? तो क्या है, हमारे स्कूल में क्या है, बहुत सारे टीचर्स हैं, तो सभी टीचर्स को मिलाकर क्या है, सब टीचर्स से सभी टीचर्स को बुलाएंगे, सबको एक नाम से क्या है बुलाएंगे, एक ग्रुप में क्या है खड़ा करेंगे. तो उनको कंबाइन क्या है टीचर से बोला जाएगा. उनको क्या है अलग अलग क्या नाम से क्या उनको नहीं बोला जाएगा. समझे? तो वो क्या है कॉमन नाउन कहलाता है, जिसको कि हम कॉमनली क्या है उसको रिफर करते हैं. ओके, so this is about your common noun. The common noun refers to a person, place or things in general. Okay, so we have discussed so far up to proper noun and common noun. The third one is your abstract noun, sorry, collective noun. So what do you mean a collective noun? A collective noun
refers to a group of things, okay, group of things or animals, okay, collection of or group of things, people or animals are said to be your collective noun. Okay, so a collective noun refers to a group of things, people or animals. So we see a lot of people accumulating in one place, gathering in one place. So what we say, this group of people, okay, so we term that group of people something to identify that is a group of something, that is a group of something, okay. Suppose a group of birds are flying in the sky, okay, a group of birds are flying in the sky. So what do we say that group, that a flock of so instead of saying a group of birds are flying in the sky, we usually say that a flock of birds are flying in the sky, okay. These are all your collective nouns, okay. So let's take an example that an army of soldiers are doing parade, okay. An army of soldiers are doing parade, and a troop of monkeys, a troop of monkeys are chattering. To look at these two sentences, an army of soldiers are doing parade, a troop of monkeys are chattering, okay. So in these two sentences, we can also say that a group of soldiers are doing parade. So instead of saying group, we usually refer that group to army, okay. So when a group of soldiers, they together stand in one place, then we refer that group of soldiers to an army of soldiers. Similarly, a troop of monkeys are chattering. So we can say that a group of monkeys are chattering. So instead of saying a group of monkeys, we usually refer to as a troop of monkeys, okay. So that group of monkeys are termed as your group of monkeys, okay. So it is your collective noun, okay. तो कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन वो नाउन को रिफर करता है जो कि क्या है, एक ग्रुप को क्या है, आइडेंटिफाई करते हैं। हम सिंगल आदमी को पर्टिकुलर कहेंगे या फिर किसी को क्या है, कॉमन नाउन में रिफर करेंगे। लेकिन जो ये कलेक्टिव नाउन है वो बहुत सारे पर्सन को लेकर क्या है ग्रुप बनाया जाता है, बहुत सारे एनिमल्स को लेकर क्या है ग्रुप बनाया जाता है, बहुत सारे थिंग्स को लेकर एक ग्रुप बनाया जाता है, हो गया। जैसे कि ए बकेट ऑफ फ्लावर्स, तो फ्लावर्स तो एक नहीं है, बुके हम लोग जो बुके देखते हैं, a bucket of देखो। सो हम लोग क्या है, फ्लावर्स को क्या है बकेट देखते हैं, ठीक है। बकेट मतलब क्या है, वो फ्लावर्स उनके क्या है बकेट में क्या भरे रहते हैं, समझिए। तो हम लोग फ्लावर्स, एक फ्लावर्स को हम लोग क्या है बकेट नहीं कह सकते, फ्लावर्स में बहुत सारे ग्रुप्स मिलकर क्या है वो बकेट क्या है कहलाते हैं, हो गया। तो क्या है, एक बकेट ऑफ फ्लावर के हम लोग क्या है कह सकते हैं। तो फूल क्या है एक ग्रुप में रहते हैं, तो ग्रुप को क्या है बकेट क्या है बोला जाता है। वैसे क्या है, मोंकीज जो है वो एक ग्रुप में रहता है, तो वो ग्रुप को ट्रूप्स बोलकर कहा जाता है। और सोल्जर्स हम जब एक ग्रुप बनाकर पैरेड करते हैं, एक ग्रुप में रहते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो उनको क्या है आर्मी बोला जाता है, समझे।
So these are all your collective. Collective मतलब क्या है? कलेक्टिव हो गया, कलेक्शन होकर क्या है, एक जगह रह जाना, दूर दूर से आकर क्या है कलेक्ट होकर एक जगह रहना, तो क्या है कलेक्टिव नाउन क्या है बोला जाता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर कलेक्टिव नाउन। ओके, so let's come to your point number 4, that is your abstract noun. So what do you mean by abstract noun? A noun that cannot be touched, okay, that cannot be touched but can be felt or experienced are called your abstract noun. A noun that cannot be touched or seen but can be felt, or experienced Okay, so what do you mean by abstract noun? A noun that cannot be touched or seen but it can be felt, experienced is called an abstract noun. That may be your pain, some feelings, that may be your enjoyment. These are the kind of things that we can't touch it but we can feel this. These are called your abstract noun. Abstract noun क्या है? Abstract noun वो noun है जिसको कि क्या है हम लोग उसको छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, लेकिन क्या उसको सिर्फ हम लोग क्या महसूस कर सकते हैं। समझे कि उसको क्या है abstract noun क्या है बोला गया है। जैसे तुम लोग का पेन है, हमको क्या है दर्द होता है, तो दर्द को हम लोग पकड़ पाएंगे कि छू पाएंगे क्या? नहीं, हम लोग उसको क्या है सिर्फ फील कर पाते हैं। तो वो सब क्या है तुम लोग का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे कोई सरप्राइज है, कोई एंजॉयमेंट है, खुशी है कि नहीं, तो अपने बर्थडे पार्टी वगैरह में हम लोग क्या बहुत खुशी महसूस क्या होता है, तो उसको हम लोग जो खुशी है उसको क्या हम लोग पकड़ सकते हैं? नहीं, हम लोग उसको सिर्फ क्या है महसूस कर सकते हैं। तो उसको क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, Rahul cried out in the number I would express my sadness or anger. Okay, so in these two sentences we can see a strong feeling. Okay, that is your pain, sadness or anger. These are kind of feeling that we can't touch it. Okay, but we can feel this kind of things. These are your abstract noun. Okay. So this is all about your kinds of noun. First we have discussed about proper noun, common noun, collective noun and abstract noun. The last one is your material noun. The noun that can be touched or feel are called your material noun. That may be your buildings, that may be your pain. Okay, these are all your materials or things that which we can touch are called your material nouns. Okay, so that is not given in your book, and you will be reading in your next or
class 5th or 6th. Okay, the upcoming classes. So once again I want to repeat that what is proper noun. Proper nouns are the nouns that refer to a particular place or thing. Proper noun वो है जो कि क्या है, पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग्स को क्या है आइडेंटिफाई करते हैं. तो पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग्स क्या हो सकते हैं, पर्टिकुलर जगह का नाम हो सकता है, पर्टिकुलर थिंग्स का नाम हो सकता है, पर्टिकुलर पर्सन रीता सीता गीता, ये क्या है पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, पर्टिकुलर जगह का नाम है. हो गया. पर्टिकुलर जगह का नाम क्या है, तुम लोग को क्या है, कोई मस्जिद का नाम हो गया, कहीं पे वो पर्टिकुलर जगह में है, जैसे कि न्यू दिल्ली में क्या है, मॉस्क है, जामा मस्जिद. हो गया. तो ये से क्या पर्टिकुलर जगह को आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये क्या पर्टिकुलर नाउन है. समझिए. देन कम टू योर सेकंड वन इज कॉमन नाउन. तो कॉमन नाउन क्या है, वो नाउन जो कि कॉमन पर्सन को क्या है रिफर करते हैं. जैसे कि उनका टीचर हो गया, स्टूडेंट्स हो गए, बॉयज हो गए, गर्ल्स हो गए. यहाँ पे क्या है, वो पर्टिकुलर नाउन नहीं है, वो कॉमन आ गए हैं. तो जब हम एक ग्रुप में किसी को अगर रिफर कर रहे हैं तो उसको क्या है, कॉमनली हम क्या उसको रिफर करते हैं. तो टीचर्स में सिर्फ क्या है, बहुत सारे टीचर्स होते हैं, जैसे इंग्लिश टीचर, मैथ्स टीचर, इंग्लिश टीचर. तो सब क्या है, टीचर में कॉमनली क्या है आते हैं, वो टीचर के अंडर ही आते हैं. चाहे वो जितने भी सब्जेक्ट वाले टीचर्स हैं वो एक टीचर के अंदर ही आते हैं. समझिए. तो वो तुम लोग का कॉमन नाउन हो गया. देन कम टू योर collective noun. When we collective nouns refers to a collection of person, place or things. collective noun में क्या है, अगर कोई ग्रुप ऑफ एनिमल्स हो, ग्रुप ऑफ पर्सन हो, ग्रुप ऑफ प्लेस हो, तो उसको हम लोग ग्रुप ना कह करके उसको कलेक्टिवली उसको कुछ ना कुछ क्या है कहते हैं उस ग्रुप को. तो उसको क्या है कलेक्टिव नाउन क्या है कहा जाता है. ग्रुप को कलेक्टिवली कुछ नाम दिया जाता है जिससे कि वो इजीली क्या आइडेंटिफाई हो सके. तो वो क्या है कलेक्टिव नाउन्स हैं. देन कम टू योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. द नाउन्स दैट कांट बी टच्ड और सीन आर कॉल्ड योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. जस्ट वी कैन फील इट. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, जस्ट हम उसको क्या है फील कर सकते हैं, उसको क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. और मटेरियल नाउन वाले जस्ट बिफोर अवॉइड है. ओके वो इट. सो दिस इज ऑल अबाउट योर kinds of nouns. In our next class we will be discussing about nouns, numbers. That there are some nouns that are countable and there are certain nouns that are not countable, okay, or uncountable. So look students, here look at your page number 24 where you have to identify common noun, proper noun and collective noun. Okay, here are given some questions. Shahbaz and Shiraz greeted each other on Eid. So here which kind of sentence is it? It is a proper noun. Okay, because here Shahbaz and Shiraz are a particular person's name, so it is a proper noun. Alok saw a flock of birds in the sky. So here we can see that flock of birds. Flock of birds means a group of birds. So it belongs to your collective noun. So similarly you have to do this all these numbers. So if you don't understand it, then it's okay with it. I will be doing it and will give it to you. Okay, so no need to worry about this question answer, about this short question answer. Okay, it will be given to you. So this is all about your kinds of nouns. So in your next class we will be discussing about nouns, number. So I want to request everyone that please be in your home and be safe in your home and wash your hands thoroughly after touching something else, so that you can be safe from corona. Okay, and each and every day you should enjoy your online classes. So once again I want to thank you for your online classes. If you have any kind of doubts, then you can ask me when the school reopens. So as long as the school is closed, you should try your level best to see all the videos that is being uploaded to you, not only my subject but also the other subjects, so that when the school reopens, when the exam will be held, you can appear that exam smoothly. So enjoy your online classes and thank you.